This is your page number 42, riverine forests. These are also called बेला फॉरेस्ट. दे आर फाउंड क्लोज टू रिवर्स. इनको बेला फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये रिवर्स के किनारे होते हैं. द बबूल, अ फॉर्म ऑफ अकेशिया एंड शीशम, आर द मोस्ट कॉमन ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट. यहाँ पर बबूल और शीशम के ट्रीज ज़्यादा पाए जाते हैं. शीशम इज़ अ स्ट्रॉन्ग हार्डवुड यूज मोस्टली फॉर फर्नीचर. शीशम की लकड़ी ज़्यादातर फर्नीचर बनाने के काम आती है. द लार्जेस्ट रिवराइन फॉरेस्ट आर इन सिंध अलॉन्ग द रिवर इंडस. और बड़े बड़े रिवराइन फॉरेस्ट सिंध में रिवर इंडस के करीब हैं. Plantations are man-made forests. They are started where there is enough water, usually near rivers and canals or close to a dam. Plantation ज़्यादातर ऐसी जगह पर की जाती है जहाँ पानी easily available हो, जैसे कि rivers और dams के करीब. Eucalyptus, शीशम and babul trees are commonly grown in plantation. Plantation में ज़्यादातर यूकलिप्टस, शीशम और बबूल के trees उगाए जाते हैं. However, eucalyptus, which is fast growing, has medicinal properties and is a natural insecticide, is also a very thirsty tree. Its roots spread deep underground and draw up all the water they can, so it is also used to drain swamps or marshes. Importance of forests. अब हम देखेंगे कि जंगलात की क्या अहमियत है. देयर आर मैनी गुड रीजन्स वाई वी नीड फॉरेस्ट. ग्रीन प्लांट्स मेक ऑक्सीजन. फॉरेस्ट या जंगलात हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि प्लांट्स से ऑक्सीजन हासिल होती है. ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड टू ब्रीथ ऑक्सीजन टू स्टे अलिव. इंसानों और जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है. विदाउट प्लांट्स देयर वुड बी नो एनिमल लाइफ. मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम मैनी अदर प्लांट्स. इसके अलावा बहुत सी मेडिसिन्स में भी प्लांट्स यूज़ होते हैं. वुड इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स एंड टू मेक फर्नीचर. Railway sleepers, wheels, oil presses, toys and plows. Softwood is pulped and made into paper. Softwood के गूदे से कागज़ बनाया जाता है. Resin, turpentine, perfumes, glue, paints, dyes and many other products are made from different parts of trees. Trees give us fruits and leaves, wood and bark, flowers and nuts. Their leafy branches are ideal homes for birds, small creatures and insects. We must be very careful to preserve the trees which grow in our forests and gardens. We must also plant more trees whenever we can.